तो एक कीवर्ड होता है फाइनल, जिसके बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले एक प्रॉब्लम थी जो मैंने शायद सैटरडे को दी थी, जिसमें वी वर रिक्वायर्ड टू रिवर्स ईच द ऑर्डर ऑफ द स्ट्रिंग्स। महेश, आपने सॉल्यूशन सबमिट किया था, मैंने देखा था उसे। नाइस यार, वो वही सॉल्यूशन है, बट प्रॉब्लम थोड़ा सा मॉडिफाइड है। वो एग्जैक्टली exactly उस तरीके से नहीं पूछी जाती है। उसमें आप एक एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस ले रहे हो। सो इफ यू आर रिक्वायर्ड कि भाई इन प्लेस हो, इन प्लेस ऑर्डर ऑफ वर्ड चेंज हो। सो लेट्स से अगर हमारा एग्जांपल था वेलकम नालंदा, तो एक्चुअली में करना ये था कि ये और ये, इन दोनों वर्ड्स को इन दोनों वर्ड्स को इन मेमोरी स्वैप करना था। यू नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी एक्स्ट्रा मेमोरी। जैसे कि ये इस तरीके से हो जाता कि नालंदा वेलकम। चलो ठीक है, इसे हम लोग आखिरी में देखते हैं। वी कैन लुक एट दिस प्रॉब्लम एट द लास्ट। लेट्स स्टार्ट विथ फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड से इम्यूटेबल क्लासेस बनाई जाती हैं। तो फाइनल कीवर्ड एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड है। इसका क्या मतलब हुआ कि वी आर नॉट डिटरमाइनिंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल और अ मेथड। इट्स अ नॉन एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड। तो ये आप वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हैं, वेरिएबल से पहले यूज कर सकते हैं, मेथड से पहले यूज कर सकते हैं, क्लास से पहले यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप वेरिएबल से पहले यूज करते हैं, जब आप मेथड के नेम से पहले यूज करते हैं, जब आप क्लास के नेम से पहले यूज करते हैं, तो इन तीन डिफरेंट कंटेक्स्ट में तीन डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं। तो जब हम एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हमें प्रिवेंट कराना होता है मेथड ओवर राइडिंग को, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें प्रिवेंट कराना होता है इनहेरिटेंस को, तब हम फाइनल वेरिएबल का इस्तेमाल करते, फाइनल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं।
तो लेट्स से जब हम इसे वेरिएबल से पहले लिखते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। चेंज्ड नॉट, ठीक है। सो वंस अ वैल्यू इज डिफाइंड, it cannot be changed। हमने कल लिखा फाइनल INT A इज इक्वल टू 64। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने A इक्वल टू 53 कर दिया। ये एक अनएक्सेप्टेबल ऑपरेशन है क्योंकि this variable is defined as a final variable, which means that we cannot change the value of such variables, ठीक है, throughout the program। Now let's have a look at final methods। फाइनल मेथड्स के बारे में क्या बात है, that these cannot be overridden। when we say that these cannot be overridden, इसका एक एग्जांपल है, we have two classes, class parent जिसके अंदर एक मेथड है पब्लिक फाइनल, पब्लिक फाइनल void m, sorry not this, कुछ body, then we have a class child which extends parent। if we try to override this method, this operation is not supported। Why? Because we have declared this method m as final। Okay, now we'll head over to how it looks like when we declare a class as final। So when we declare a class as final, final class m1, something is written। When we try to inherit this class m1, class m2 extends m1, operation
not supported. Those, these are the three things: final classes, final methods, final variables. Now, I have an example. I have a question. Let's say we have a final array. We did some initialization 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5. And what we did here is we tried to change the value. A of 0 is equal to, let's say, 11. Would this operation be permissible? क्या ये कोई कंपाइल टाइम एरर थ्रो करेगा? क्वेश्चन समझ आया? अर्पित, महेश, ये क्वेश्चन समझ आया? या फिर हम लिखते हैं final string buffer as b is equal to what we did here is sb dot append x. महेश, स्ट्रिंग बफर है ना, तो अगर हम किसी स्ट्रिंग बफर को फाइनल डिक्लेयर करते हैं, क्या हम उसमें अपेंड मेथड चला सकते हैं? क्या ये कंपाइल टाइम एरर थ्रो करेगा? महेश, नाउ हियर इज द थिंग. आप लोगों को लग रहा है दिस इज गोइंग टू थ्रो अ कंपाइल टाइम एरर, but it is not going to throw us a compile time error. Let me tell you the reason why this is completely acceptable. This operation is completely acceptable in terms of array or in terms of string buffer, simply because of the fact that we this is all memory by reference. Memory by reference. This is all memory by reference. हमें एक रेफरेंस एड्रेस मिलता है, उस रेफरेंस एड्रेस पे हम पॉइंट करते हैं ताकि हमें वैल्यू मिल सके. करेक्ट? We don't actually refer to a value, rather we refer to a reference address. That's why that's why we can just freeze that reference address. Okay, let me show you how. हमने ये लिखा कि integer a is equal to 1
2, 4, 8, and a of 0 is equal to 11, तो क्या होता है कि a के एड्रेस 1024 होता है. लेट्स से ये हमारा एक इंटीजर एरे को पॉइंट करेगा. लेट मी रिपीट दैट अगेन. पॉइंट करेगा. तो लेट्स से हमारा रेफरेंस एड्रेस एरे का स्टार्ट होता है 1024 से. और every after every let's say after every 8 bytes, let it would be 102, 1032, 1040, 1048. After every 8 bytes, every next integer in the array is stored. So our array variable a is going to point at the first element inside the array, which is referred by address 1024. ठीक है. So this reference address 1024 is finalized. This reference address 1024 is uh, is never going to change. Not the values inside those address. They can change at any point of time throughout the entire program. But this reference address is never going to change. So A array is going to refer to or point to this address at all the times. Okay. Let's say tomorrow, if we want to change the value at some reference address 1024 to 10, it is completely permissible because we have not changed the reference address. We have not changed the memory reference. Okay. This is known as this property of final keyword is known as non-transitivity. ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. इट्स डैम इम्पोर्टेंट. ठीक है. नाउ वी हैव अ स्ट्रिंग बफर. स्ट्रिंग बफर क्या होता है? वी हैव स्ट्रिंग क्लास. ठीक है, हमने स्ट्रिंग क्लास के बारे में पढ़ा था. String class is what? String class is an immutable class. Immutable class का मतलब क्या होता है? Once a value is initialized to certain variable str, it will remain the same. But it's not the case with string buffer. We can change the value. ठीक है? String buffer are mutable strings. So if we want to say string buffer SB is equal to Nalanda, ये स्ट्रिंग बफर में कैरेक्टर्स कुछ इस तरीके से स्टोर होंगे. अगर हम sb डॉट अपेंड कर रहे हैं तो एक्चुअली what we are trying to do here is we are trying to append a character to this string buffer, which is completely possible because if we declare a string buffer even as final,
तो उसका पहला मेमोरी एड्रेस, तो द फैमिली, द फर्स्ट रेफरेंस एड्रेस, let's say it is 2048, this is going to get frozen, this is never going to change, but we can change the value at that reference address, irrespective of the variable being declared as final or non final. I hope you understood the context here. This is known as non transitivity. कल को आपसे कोई पूछता है that final string buffer लिखा हुआ है, sv equal to something, and what we did here is sv of 0 is equal to uh, x. This is completely acceptable operation even if we declare a string buffer as final. I hope you understood the context here. Please stop me if you have any questions, or we can proceed further. Okay, now we can proceed further. ये जो क्वेश्चन है ना, this is, so we have gone through some immutable classes. For example, we have gone through string. String is what? String is an immutable class. ठीक है, तो an interviewer, this question is asked from me in every interview, ठीक है, तो ये तो मतलब mark this as a very very important question of how to implement an immutable class. Or you need to write an immutable class. What are immutable classes? Immutable classes की properties क्या होती हैं? Immutable classes की property में 4 points हैं जिन्हें हमें हमेशा follow करना है. First point है कि class को, the class must be declared final so that it cannot be modified, can't be second point है that all data members
must be declared private so that direct access is not allowed. Third point, data members, all data members must be declared final. All data members must be declared final so that we can't change the value after creation. Fourth point क्या है? You have to memorize all these points that I'm writing. ठीक है? Because once you get a grasp over them, you can write your own immutable class. You need to declare, fourth point है, you need to declare a parameterized constructor. Why we need to declare a parameterized constructor? To initialize all fields. Next, deep copy of the objects. Deep copy of objects should be performed in getter methods rather than returning the actual object. तो हम इन पांचों पॉइंट्स के ऊपर एक एक करके जाते हैं. So let's say we have a class student which we wanted to declare it as final. How can we do so? The class should always be declared as final with a final keyword. Next, let's say we have two data members, private string name,
it has to be declared final. Next, we have hash map, private final map, string, comma string, metadata. Okay, we have these two data members which we have declared it as final and private. These were the 2 points mentioned. Point number second and third. They are clearly mentioned that we have to declare all the data members as private and final so that the direct access to them are not allowed. So that the direct access to them is not allowed. Hmm. Now we'll have to declare a constructor here, a parameterized constructor of student class. What it will do, it's going to initialize the data members inside the immutable class once and for all. And that initialization, after that initialization has been done, we might never be able to change the value. That's it. So public student string name map string string metadata. Inside this, we have to do this dot name is equal to name. Now, we just cannot do this dot metadata is equal to metadata. We just cannot perform this. Why? Because it's required for us to go and do deep copy. Deep copy करना हमें जरूरी है. तो ये हम कैसे करेंगे? ये हम इस तरीके से कर सकते हैं. This dot metadata is equal to new hash map. Okay. Now we can iterate through these. We can iterate through this hash map. अब भाई iterate hash map के ऊपर करना is a bit tricky. हम कुछ methods का इस्तेमाल करते हैं. We know we will use map dot entry string map dot entry string comma string entry this metadata dot entry set. ये एक ये फॉर ईच का नोटेशन है जो हम लिस्ट के थ्रू भी जिसको हम लिस्ट
के लिए भी यूज कर सकते हैं, लिस्ट में आइटरेट करने के लिए। हमें सिर्फ कोलन डिफाइन करना होता है, and our for loop is going to do the entire iteration. For loop is going to check the condition, for loop is going to move to the next element, and so on. Now क्या कर सकते हैं हम, this dot metadata dot put entry dot get key। तो हमें कोई भी हैश मैप मिलेगा, उस हैश मैप के एंट्री में क्या होता है, उस हैश मैप के एंट्री से हमें क्या मिलेगा, वील गेट अ की वैल्यू पेयर, जिससे हमें की वैल्यू पेयर को सेग्रीगेट करना होगा। एंट्री डॉट गेट वैल्यू। तो इस तरीके से हमने डीप कॉपी परफॉर्म की हुई है। डीप कॉपी परफॉर्म करने का मतलब ये है कि इंस्टेड of directly copying the memory reference, we are going to create new memory reference, and then we are going to perform deep copy. Why are we going with the deep copy? Because कल को भाई these are all memory by reference data types। ये metadata नाम का हैश मैप है। इस metadata नाम के हैश मैप में बहुत सारी वैल्यूज हैं। लेट्स से x की वैल्यू मैप्ड है y के साथ, a की वैल्यू मैप्ड है b के साथ। ये metadata नाम का वेरिएबल हमारे एक फाइनल क्लास के अंदर आता है, फाइनल क्लास के अंदर आता है, और हमने इसका सिर्फ मेमोरी रेफरेंस कॉपी कर दिया फाइनल क्लास के डेटा मेंबर के अंदर। तो मेटा डेटा के अंदर इसके फाइनल क्लास के मेटा डेटा के अंदर उसका मेमोरी रेफरेंस आ गया 1024 लेट्स से। तो क्या होता है, अगर हमारे पास सिर्फ इसका मेमोरी रेफरेंस हो बाहर, क्योंकि हम इसे कॉल कर रहे हैं ना, हम इसे कॉल कर रहे हैं, तो वी नो, हमारे पास बहुत चांस है कि हमें इसका मेमोरी रेफरेंस पता होगा। तो हमें, क्योंकि हमें इसका मेमोरी रेफरेंस पता होगा, वी कैन चेंज द वैल्यू इनसाइड दिस हैश मैप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यही हमने मेमोरी बाय रेफरेंस के बारे में बात करी हुई थी। वी वांट टू अवॉइड दैट, दैट्स व्हाई वी परफॉर्म डीप कॉपी। जब भी हम मेमोरी रेफरेंस, जब भी we just want to prevent the audience, we just want to prevent the consumer to have a hold of the memory reference, that's why we perform deep copy। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है which can be asked by an interviewer। ये तो भैया पूछा ही जाएगा that you need to implement a immutable class। ठीक है, you need to first explain them all the properties of an immutable class, which is explained in 5 points above, and then you have to implement an immutable class all by yourself। I hope you understood। Now next question क्या हुआ, next हम एक मेथड बनाएंगे public string get name। इसके अंदर रिटर्न कर देंगे this name, sorry यार, this name। नेक्स्ट अगर हम क्या करते हैं, we try to perform
we try to write a getter for our metadata. Get metadata. What we are required to do here, हमें यहाँ पे डीप कॉपी परफॉर्म करनी है. क्यों भाई डीप कॉपी परफॉर्म करने की जरूरत क्या है? Because we don't want our consumer to ever know the memory reference of our variables. तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे map string string temp new hash map string comma string. अब हमें फॉर ईच करना होगा. फॉर map map dot entry string comma string entry colon. This dot metadata dot entry set. इसके अंदर हम क्या परफॉर्म करेंगे, temp dot put entry dot get key comma entry dot get value. Return temp. हमने क्या किया, डीप कॉपी परफॉर्म की एंड देन वी रिटर्न द वैल्यू. दैट्स इट. ये एक पूरी इम्यूटेबल क्लास. तो एक काम करते हैं, आप लोग इम्यूटेबल क्लास का इम्प्लीमेंटेशन लिख के आना. कल कल देखते हैं. वी कैन कल हम इसके बारे में बात करते हैं. ओके मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ पीडीएफ में. ठीक है. ठीक है. थैंक यू.